In continuation with the previous class where we discussed PCM, elements of a PCM system, we had started that, or you can say elements of digital communication. We have discussed some of the elements or some of the blocks, I would say, and we will continue to discuss some more blocks. So this lecture is actually in continuation with the previous lecture. The topic has not been completed yet. And we had an important block named as quantizer. So the heading for today's class is quantizer or quantization process. Quantization process. We have seen a relation previously between L and between L and N, and L stands to be the number of levels. L is number of levels and N is number of bits that need to be used to identify different quantization levels. Now let's understand this thing in detail. Let's imagine a signal which looks like this, which has some minimum value, say 1 volt, and highest value, say 8 volt. All other values may be somewhere around 2 volt, 3 volt, 4 volt, and like that. So in order to perform quantization, we need to first understand or identify, eyes on board please. In order to perform quantization, we need to first identify the dynamic range of the signal. That means what is the minimum and the maximum value of the signal. So you can see what's the maximum value, it is 8 volt. So step number 1 for quantization process or S1 is we divide the maximum value of the signal. We divide the maximum value of the signal or of the dynamic range of the signal into L levels, and middle value of each level is taken as quantized voltage level, value. So we divide the maximum value of the signal into L levels, okay, and then the midpoint of each level will be used as a quantization level or quantization value. What do we mean by that is this. Suppose we have 8 volt as the maximum value, we have 0 volt as the minimum value. We will have equal division, say 6 volt is over here, 4 volt is over here, 2 volt is over here, and 0 पर ज़्यादा ही नीचे लगा, इसको थोड़ा ऊपर ही बना देते हैं। तो हमने क्या किया इसको into L, बेहतर यहाँ पे रहेगा वर्ड यूज करना इक्वल लेवल्स या इंटरवल्स। अब L डिसाइड करना है, वो भी देखते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पहले यहाँ तक देखिए, आपका 8 था मैक्सिमम वैल्यू, आपने उसको L लेवल्स में लिए, L कहाँ से आता है वो बाद में देखते हैं। उसके बाद हर एक लेवल का मिड पॉइंट जो है, ये कितने वोल्ट होगा यहाँ पे,
Q7 वोल्ट, ये कितना होगा Q5 वोल्ट, ये कितना होगा Q3 वोल्ट, ये कितना होगा Q1। ये वाले वोल्टेज वैल्यूज, इफ यू रिमेंबर इन प्रीवियस एग्जांपल 1 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 and 7, यही वैल्यूज को शायद देता। But anyways, 1 volt will be represented by 0, 0 because quantization voltage level will be represented by some bits. Once you have divided into L levels, अब जितने mid points बन गए उतने ही आपके पास rather उनके रिलेशन में आपके पास नंबर ऑफ बिट्स होगी। So 4 mid points हैं, so therefore only 2 bits per level. This will be 0, 1. This will be represented by 1, 0. This by 1, 1. अब आपको थोड़ा समझ आ रहा है कि 0, 1, 1, 0, 1 ये क्या है, ठीक है? So, इसके बाद क्वांटाइजर क्या करता है कि एक सैंपल वैल्यू लेता है और अपना क्वांटाइज वैल्यू एज एन आउटपुट देता है। यहां से बेस्ड ऑन क्वांटाइज वैल्यू एनकोडर आपका आउटपुट देगा और देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन एरर, या आप लीजिए इट इज इक्वल टू सैंपल वैल्यू माइनस क्वांटाइज वैल्यू। लेट्स एज्यूम, मैंने एज्यूम किया मेरे सैंपल का वैल्यू है 0.3। अब 0.3 कहाँ आता है? 1 और 0 के बीच में। इस रेंज में नियरेस्ट क्वांटाइजेशन वैल्यू कौन सा है? हाँ, 0 कोई क्वांटाइजेशन वैल्यू नहीं है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो क्वांटाइजेशन वैल्यू जो है वो 1 वोल्ट आएगा 0.3 के। सपोज मेरा दूसरा सैंपल है 1.6 वोल्ट। 1.6 कहाँ पे है जी? यहाँ पे। इसका नियरेस्ट क्वांटाइजेशन वैल्यू कौन सा है? 1 वोल्ट की है, ये साइड से होता है, ये ऊपर थोड़ी ना गया, मतलब ये 1.6 है। 1.6 1 के नजदीक है कि 3 के नजदीक है? 1, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? नो इश्यूज, अंडरस्टैंड दिस अगेन। 0.3 जो था, 0.3 यहाँ पे था, 0.3 के नजदीक जो क्वांटाइजेशन वैल्यू था वो 1 वोल्ट था। अब नेक्स्ट सैंपल है 1.6, 1.6 करीब यहाँ पे होगा, 1.5 से थोड़ा होगा। अब 1.6 यहाँ पे है, मुझे देखना है 1.6 के नजदीक क्वांटाइजेशन लेवल जो है, क्वांटाइजेशन वैल्यू इसको कहते हैं, इसको नहीं कहते। क्वांटाइजेशन वैल्यू है ना Q5, Q7, these are quantized value। इसको ले लिया, सुपर तमोक चैनल, फिर मोबाइल फोन, ठीक है? कौन चैनल? असं केलं रोज येऊन तुमचा इंटरेस्ट काय सुद्धा। So 1.6 is near to the 1 volt, therefore quantized value is equal to 1 volt. Likewise, 2.5 volt quantized value will be 3 volt and 7.9 volt quantized value will be 7 volt. कैसे क्या है आप खुद देख लीजिए। मुझे ये बताइए, जब 1 volt है, हाँ आप बताइए, For 1 volt, what will be the encoder output? Excellent, 0 0. Why? Because हमने कहा कि 1 volt is represented by 0 0. Okay? आप बताइए आप। For the second case, 1 volt, encoder output will be 0 0 because 1 is equal to 0. 3 volt के लिए 0 1. 7 volt के लिए 1. हो गया ये? अब मुझे बताइए क्वांटाइजेशन एरर पहले केस में कितना है? क्वांटाइजेशन एरर इज इक्वल टू सैंपल वैल्यू माइनस क्वांटाइज्ड वैल्यू। पहले के लिए है -0.7, दूसरे के लिए है
0.6, तीसरे के लिए है -0.5 और चौथे के लिए है 0.9 वोल्ट। यूनिट साथ साथ में भेजिएगा। ये थोड़ा रियलिस्टिक एग्जाम्पल है, आप इसके ऊपर फोकस कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे एग्जैक्टली लेवल्स को डिवाइड किया, फिर हर एक लेवल का मिड पॉइंट लिया, व्हिच इज मोर एग्जैक्ट। अब देखिए सैंपल वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 वोल्ट, और क्वांटाइज वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 7 वोल्ट। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? 7 वोल्ट। अब हम निकाल रहे हैं क्वांटाइजेशन एरर, हमने निकाल दिया। मेरा सवाल आपसे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वांटाइजेशन एरर कितना हो सकता है? लेट्स सी, वो हम निकालेंगे कुछ इस तरह से। सैंपल वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 8, है ना, 8 से ज्यादा नहीं जा रहा है। क्वांटाइज वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 7। और एल्स आई कैन, इफ आई गो टू द लोअर लेवल, सैंपल वैल्यू का मिनिमम वैल्यू हो सकता है 0 वोल्ट, क्वांटाइजेशन का मिनिमम वैल्यू है 1 वोल्ट। अगर हम देखिए यहाँ का डिफरेंस जो है, यहाँ पे एरर इज इक्वल टू 1, यहाँ पे एरर इज इक्वल टू -1। Therefore, as a conclusion, we say that the maximum, या इसको लिखिए, ये important point है, ये स्क्रीन में आ होगा, maximum quantization error, maximum quantization error, that is QE max, is equal to plus minus delta by 2। लिखिए अब डेल्टा क्या है, where delta is the step size, right? क्या, where delta is the step size, where delta is the step size, and let me show you, eyes on board. This is delta. Delta is step size कि आपने जो L levels जो आपने डिवाइड किया, वो आपने डिवाइड किया बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ डेल्टा। डेल्टा आपने फिक्स किया था 2, इसलिए 8 को जब आपने 2 से डिवाइड किया है तो इस तरह से आपकी लेवल बन गई। 0 को जब आपने 2 ऐड किया तो 1 लेवल बन गई, फिर 2 ऐड किया दूसरी, फिर 2 ऐड किया जब तक आप 8 तक पहुंचे। Fully exhaust, बंदर को पाने थोड़ा, that the total line degree of the signal is divided into L equal number of steps where each step is denoted by delta and is called as step size. The midpoint of each step is known as the quantization value. See? So each sample will be rounded off to one of the quantization values. ये सबसे important line है, that each sample will be rounded off to one of the quantization values. Each sample value will be rounded off to one of the midpoints of the step or the quantized value. Because midpoint of the step क्या है? Midpoint of the step क्या है? Quantized value. Round off to the quantized value, one of the quantized, the nearest quantization value. अब इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर्मूलाज का है। तो बाकी जो हमने देखा है, जो बाकी ब्लॉक्स है, डिकोडर हमने लिख लिया था, डिकोडर का काम होगा डिकोड करना, लो पास फिल्टर का काम होगा to get the final signal back. Now the important part is आप heading लिखिए formulas for PCM. Important heading is formulas for PCM and is again the important
part. Heading is formulas for PCM. देखिए एक खास फोकस हमारा है न्यूमेरिकल्स पे. I think we have gone through the subject where numericals has been a focus. So I hope that you can develop similar approach in other subjects wherever possible. That आप एक formula का एक थोड़ा सा पेज अलग से बनाइए पूरे subject के लिए. I hope that you will do much better in numericals than what you are doing, because it's just a matter of practicing and getting into the numericals. Once you practice more, it will be easy for you to get it done. First one, we know L is equal to 2 raised to n. Keep on writing very fast. We know यहाँ पे साथ में लिखिए L is equal to number of levels. N is equal to number of bits. Number 2, delta, that is the step size, is calculated by V max minus V min divided by 2, divided by L, or we can say V peak to peak divided by 2 raised to n, another way of writing the same thing. Well, delta is nothing but ये क्या है? Step size. Third formula, assuming इसमें हम साइड में assuming that we have sine and cosine functions, delta will be given. Eyes on board. Assuming that we have sine and cosine sine or cosine functions, in that case delta will be twice am divided by 2 raised to n. The reason being हमारे पास sine के पास ये am होगा and ये minus am होगा, इसलिए twice am आएगा. ये simplified version है इसी चीज का. Fourth one, quantization error is equal to sample value minus quantized value. You know this. Then QE max is equal to plus minus delta by 2, which we have practically seen. देखिए आपने this part. Fifth one, bit duration given as TB, or the period of the bit. इसमें आप देखिए, for example, if we use 2 bits per sample, then T of S is equal to 2 times TB. That every sample will have the period of 2 times the period of each bit. Therefore, TB in such a case will be TS divided by 2. That is obvious. What do I mean in order to understand this better? Here we have 0, 1, 1, 0. So this would be TB, and since each sample comprises of 2 bit durations, this will be TS, and then this will be the next TS. This is TS1, this is TS2, and so on. So the general expression for this is TB is equal to TS by N.
where n is the number of bits per sample. So general expression होगा इसका PB is equal to TS by n, and reverse also is possible, that TS is equal to n times TB. One of the most important formulas is number 6. We have bit rate, very important point. It is given by RB, and bit rate is bits per second. The general expression for RB is equal to n into f of s, where fs is the sampling frequency, where fs is the sampling frequency. Another point to note is RB is equal to 1 by TB. RB is equal to 1 by TB, and obviously fs is equal to 1 by TS. They both have the inverse relation. Point number 7. Maximum वर्डिंग का ध्यान दीजिए. Maximum transmission bandwidth that is bandwidth max is equal to B. However, point number 8, if it is asked generally, अगर ये पूछा गया है कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ कितनी है, तो आपका आंसर आरबी निकालोगे, वो दे दोगे. If it is asked ट्रांसमिशन बैंडविड्थ कितनी है और मिनिमम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ कितनी है, दैट इज गिवन बाय सिंपली बैंडविड्थ या बैंडविड्थ min, and is equal to RB by 2. So ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम PCM सिस्टम्स की बात करें. ये सारी फॉर्मूलाज किसकी है? PCM की है. फॉर्मूलाज फॉर PCM. एक इधर पॉइंट है कि ये एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए. मैसेज सिग्नल, क्वेश्चन लिखिए जल्दी से. मैसेज सिग्नल क्वेश्चन है आपके लिए. देखो भाई क्या करेंगे आप. मेरी अब तक की मेहनत ने क्या किया है एग्जैक्टली आपके ज़हन के अंदर, मुझे आज इस क्वेश्चन से पता चलेगा. सो द क्वेश्चन इज अ मैसेज सिग्नल ऑफ अ मैसेज सिग्नल. तो याद रखिएगा ये सारी फॉर्मूलाज आप अच्छे से नोट डाउन करके बहुत क्लियर तरीके में अपने नोटबुक पे रखेंगे और इनको यूज करेंगे. ठीक है. एंड यू कैन यूज सिमिलर अप्रोच फॉर ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स. I'll give it to you. So moving on to the numerical. The numerical is a message signal of m of t. Yeah, a message signal given as m of t equal to 10 cos 4 pi 10 cos 4 pi into 10 raised to power 3t is transmitted, is
transmitted through a 5-bit through a 5-bit through a 5-bit PCM system, through a 5-bit PCM system. So you have to find AM, FM, N, तो क्या फाइंड करेंगे? FS, L, डेल्टा, QE मैक्स. अभी कोई स्टार्ट नहीं करेगा, वेट कर लो. RB, TB, bandwidth max, and finally the bandwidth. इसमें जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, एक पॉइंट जरा ध्यान रखिए. f of s is equal f of s to the sampling frequency here is the Nyquist, आपकी Nyquist NQUI की Nyquist rate sampling. एक साइंटिस्ट ने दिया है कि Nyquist sampling वो वाली सैम्पलिंग होती है जब हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है बराबर 2 times when it is equal to 2 times f. So f of s is the Nyquist rate sampling and is given by 2 times fm. What is fm? Huh? चलो स्टार्ट करो भाई, क्या कर रहे हो? ये न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं. इनके आंसर आप बोर्ड की तरफ देखेंगे नहीं, कोई भी बोर्ड की तरफ नहीं देखेगा. राइट आंसर्स n कितना है इस सिस्टम के लिए? n is clearly given as 5. उससे आपका सारा काम आसान हो गया. n निकल गया, so you should try to search कि n का वैल्यू क्या होगा. Thank you. That marks the end of today's lecture.